तारीख गवाह इस बात की कि वी हैव ऑलवेज अचीव्ड द इम्पॉसिबल, द वर्ल्ड थॉट कैन नेवर बी डन। बच्चों, जो फैसले अल्लाह कर देता है, अल्लाह की बंदों की जबान से वो सिर्फ अदा होते हैं, उन फैसलों में कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन इंसान खुशनसीब होते हैं जो अपने आप को उस फैसले का हिस्सा बनाते हैं। अपने वक्त के मिजाज को समझो। आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है, कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। इट वॉज क्रिएटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। 50 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बना है। ये मुल्क, इसको छोटा नहीं समझना। ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख लेकर अपने साथ आया है। अल्लाह उसके रसूल का साया है इसके ऊपर। ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन, ये सब हिलाली परचम, ये परचम सितारा हिलाल, रफ्तार तरक्की और कमाल। ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल और जान इस्तकबाल भी है, और इस पर साया खुदाए जलाल। मायूस मत होना कभी, बात ज़हन में रखो बच्चों। अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने। आए आपको बताएं इस पाकिस्तान का रोल, अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं। आज अगर पूरी मशरिक और मगरिब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है, तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नोट नहीं करते मेरे बच्चों, अल्लाह के फजल से हमने जिस फील्ड में हाथ रखा है उसकी उरूज पर पहुंचे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यह पाकिस्तान बच जाता। अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी, हम उरूज पे पाए। हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को लगती है। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा, वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है, हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, तोड़ के इसको अलग करके रख दिया। 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए, जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैकवक्त इंडियन एंड इसराइली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ है। दे आर स्केयर्ड ऑफ अस, दे टेरराइज्ड ऑफ अस। पूरी मुसलमान दुनिया की फोर्सेस को हम तरबियत देते हैं और ट्रेन करते हैं। वी आर द रिचेस्ट कंट्री ऑन दिस गॉड्स अर्थ। वी हैव द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल। वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट सिविलाइजेशन एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद अस। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पास है। दुनिया का सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क हमें है। दुनिया के सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत करने वाली कौम है। रियलाइज द टाइम इन विच यू हैव बीन बॉर्न। अब हम आपको वही बात दोबारा रिपीट करते हैं, खुशनसीबों के दौर में खुशनसीबों के अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर अब तुम्हारे हवाले कर दी। तुम्हारी तकदीर उसकी तकदीर बनेगी, तुम्हारी रजा से वो लिखेगा कि क्या करना चाहता है। लेकिन शर्त उसकी एक दे दी उसने कि मोहम्मद से वफा से वफा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खयानत नहीं करना। डू नॉट बिट्रे योर रसूलुल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यू शुड नॉट बी अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। Without the soldier's best friend, his firearm. This is the MP5 Parabellum. Short for Machine Pistol 5, it is a submachine gun with origins tracing back to the 1960s when it was developed by German manufacturer Heckler & Koch. Though it is the smallest personal combat weapon in the Pakistani infantry's arsenal, the MP5 plays an increasingly important role in today's security climate.
Traditionally used by officers, the MP5 is now being increasingly deployed among soldiers as well, in a new sort of security operation, the close quarter battle. Close quarter battle, or CQB, is not like a conventional battle, with two armies facing off across the border. Instead, CQB is a military operation meant to engage a domestic enemy at close range. Usually in a built-up area, a compound, or an urban setting. Because the operational area is small and usually involves room-to-room combat, the MP5's small size and short range actually work to its advantage. ये वेपन MP5A2 है, पाकिस्तान की बनी हुई है। ये निहायती वजन में हल्का हथियार है और फायरी शरह इसकी काफ़ी तेज़ है। क्लोज क्वार्टर बैटल में इसकी मूवमेंट आसान है। अगर तंग जगह पे हम बड़ा हथियार लेके जाएं तो जब हम इसको बदन के साथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हथियार होगा, उसकी बैरल बड़ी होगी या कोई हिस्सा भी उसका बाहर होगा, जब हम मूवमेंट करेंगे, टर्न करेंगे तो वो आगे फंसेगा किसी चीज़ के पास। उसके बरक्स ये वेपन हमारा बॉडी के साथ बिल्कुल टच रहता है, हम इसको साथ रखते हैं और जब चाहे हम इसको इजीली आसान इस्तेमाल कर सकते हैं। Considering the current security threats facing Pakistan, the deployment of the MP5 is key. Though compact, it is handy and mobile. Still, the MP5 is not a weapon that can be easily used in a conventional military engagement, but rather is meant for the swift and sudden environment of close quarter battles, where the enemy turns up suddenly and unexpectedly. This is the G3, the Pakistan Army's mainstay battle weapon. Every soldier and officer undergoes training on it. The G3 is not exactly cutting-edge personal assault rifle technology. Originally produced in the 1950s by Heckler & Koch, the origins of the G3 can be traced back to World War II. The rifle has a sturdy 7.62 caliber and is designed for semi-automatic and fully automatic modes, meant to be fired from any shooting position. Its low cost, particularly because it is manufactured locally in several countries, has helped its case. During fully automatic firing, basically due to the powerful recoil generated by its bullet, which disallows accurate aiming. The MP5 is a paramilitary weapon, while the G3 is a personal assault rifle that is suitable for conventional infantry engagements. But the common factor between both these machines is that they are individual weapons, or weapons every soldier and officer can be equipped with. This one is not. Welcome to the machine gun. To be more exact, the 7.62mm MG3. Today, the Army uses the MG3's 1A3 version, made in Pakistan with the design tracing back it has shortfalls. The LMG is not a very mobile weapon, weighing in at over 25 kilos when its bipod is attached. The bipod is not a luxury. Because it is automatic, the recoil is so intense that using a bipod is essential. Still, the LMG is not a very accurate weapon and is meant to suppress enemy fire versus actually directly targeting enemy forces. Compared to other modern machine guns, it is also too long, measuring over 1200 millimeters, and difficult to run and set a target with. In a conventional military engagement, where an infantry unit can actually provide cover for a machine gunner as he sets up his bulky weapon for combat, the deployment of the LMG makes sense. But in Fatah and Swat, where the action is swift and sudden, the LMG is dated technology. However, it is mounted on vehicles in military convoys, but again as a fire suppressor, not a precise killer. The LMG also has a special designation.
In an infantry unit, the LMG is classified as a section weapon. The section is the lowest division of any unit. Not everyone gets the privilege or the arduous responsibility of handling the LMG. During training exercises, instructors usually assign the LMG to the most junior or overweight man in the section to carry around. But in war, the LMG is only handled by one of the steadiest hands in the formation. You were shown the basics about the arms that make up this force and saw how the largest arm, the infantry, physically prepares for the rigors of battle and conducts weapons training. And what is the importance of its largest arm, the infantry? You also saw the basic training the infantry goes through and the type of weaponry it trains on. You will see how the infantry trains for major and minor operations of war. You will also learn how the infantry is gearing up for fighting terrorists, a type of combat where completely different rules apply. As the front lines of Pakistan's security threats are changing, is the infantry keeping pace? Though late in the coming, anti-terrorist training, or as the army calls it, ATT, is now a part of the regular infantry training module for most units. Completely different from conventional military training, troops are taught fighting techniques which